6 साल पहले मैंने मेरा पहला आईफोन खरीदा था, द आईफोन SE। उसके बाद I got my hands on the iPhone 10, the 10R, 11 before I finally settled for the iPhone 12 mini. Cut to 2022, Nothing Phone 1 launch होता है and Carl Pei directly aims at Apple. Cut to 2023, I put my SIM in the newly launched Nothing Phone 2 and एक iPhone user के perspective से here's how the Nothing Phone 2 did. So let's start with the well-lit elephant in the room, the glyph. जब Nothing Phone 1 लॉन्च हुआ तो काफ़ी लोगों ने इसका अप्रिसिएशन भी किया, बट काफ़ियों ने कहा कि दिस ग्लिफ इज जस्ट अ गिमिक. With the Nothing Phone 2, the company literally broke it into more pieces to make it more usable. So अब यही ग्लिफ आपका वॉल्यूम इंडिकेटर है, आपका चार्जिंग लेवल चेक है, आपका नोटिफिकेशन लाइट है. दिस कैन ऑल्सो टेल यू द प्रोग्रेस ऑफ योर ट्रिप्स एंड आपको सब कुछ यहीं से पता लग जाएगा. आपको स्क्रीन देखने की तभी ज़रूरत है जब कुछ बहुत ज़रूरी हो. इनिशियली आई गॉट बोर्ड ऑफ द ग्लिफ इंटरफेस एंड स्टार्टेड थिंकिंग कि इसका एक्चुअल यूज़ क्या है. But then as you use it more and more, it becomes more and more natural and a part of your daytime routine. However, the build of the phone itself is an issue. अब एक हफ्ता पहले हम लोगों ने इसका स्क्रीन गार्ड रिमूव किया था to take some close-up shots of the phone. And हफ्ते भर में ही this has already started picking up scratches. Now, I did some research and found out that this has Corning Gorilla Glass 5, जिसकी drop resistance अच्छी है, but इसका scratch resistance इतना बढ़िया नहीं है. But coming to the back of the phone, you again have Gorilla Glass on the back, but we can't find out which version this is. So if you're going for this phone, you must slap on a case and a screen protector before you start using it. Now the camera does get a little heated up when you record for a really long time, but it doesn't get uncomfortably hot in our testing. Now there are subtle corrections, the camera makes subtle corrections and जो images आएंगी वो काफ़ी lively और काफ़ी natural looking होती हैं. The daylight photography capabilities of this phone are really good. Both the wide and ultra wide capture a bucket load of detail ताकि आप image में पूरे तरीके से zoom in करके आराम से explore कर सकें. In artificial and low light situations too, the phone cameras perform really well. These cameras are optimized to pick up low light and shutter lag बहुत ही कम है and इस glyph light को भी आप as a fill light use कर सकते हैं, which is an added feature. So अगर एक iPhone यूजर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वीडियो रिकॉर्डिंग को पॉज करके रिज्यूम कर पाना ही अपने आप में बहुत बड़ा फीचर है. एंड देन यू कैन ऑल्सो सीमलेसली स्विच बिटवीन द फ्रंट एंड रेयर कैमराज व्हेन रिकॉर्डिंग. अब ये एडेड फीचर्स अलॉन्ग विद द करंट इमेज एंड वीडियो क्वालिटी ऑन दिस फोन मेक इट अ रियली गुड कैमरा सिस्टम. परफॉर्मेंस की बात करें तो दैट डिपार्टमेंट इज बीइंग हैंडल्ड बाय द फ्लैगशिप Snapdragon 8 Plus Gen 1 chip paired with up to 12 GB RAM and 256 GB storage. Even if आप बेस वेरिएंट भी खरीदते हैं तो यू स्टिल गेट 8 GB RAM and 128 GB स्टोरेज, जो कि ज़्यादातर यूजर्स के लिए सफिशिएंट है. It can handle games, multitasking, loads of apps and pretty much anything you can throw at this phone. Now there's no abrupt heating or battery drains. 4700 mAh की बैटरी है with 45 watt wired charging. बट फोन इतने अच्छे से ऑप्टिमाइज किया गया दैट यू गेट अ फुल डे ऑफ बैटरी लाइफ ऑन अ सिंगल चार्ज. आई रियली लाइक द वे नथिंग हैज tuned and optimized the Nothing OS 2.0. It feels really close to stock Android but still has a personality of its own. There's Material You theme going all around the device, but the blacked out icons feel really neat. Then there are the Nothing widgets to make the home screen more customizable and useful. And settings के अंदर you find an app cloner and an app locker. दोनों ही बहुत ज़रूरी फीचर्स हैं. And that's about it for the Nothing OS 2.0. It's a clean user interface with useful widgets and useful features where you need them. And that's it. To sum it up, मेरे जैसे iPhone user के लिए भी Nothing OS 2.0 is a very premium experience. And for existing Android users as well, I think ये बहुत ही premium और easy going experience रहेगा. So, after using the Nothing Phone 2 as my primary phone for over a month, I can say that Nothing has come really close to replacing my iPhone. But इसका एक catch है. अगर आप इसे डायरेक्टली iPhone से कंपेयर करते हैं, then there is the premium build, the smoothness and the user experience and the software optimization that brings everything together. But अगर आप इसे Apple ecosystem से कंपेयर करते हैं, then the iPhone pulls forward. So in a nutshell, Nothing ने एक premium, easy to use device बना दिया है, but now they need to build an ecosystem around it. And maybe they should also give us a phone जिसे हम बिना एक केस और स्क्रीन गार्ड के भी confidently use कर सकें. So those are our detailed 2 cents on our experience with the Nothing Phone 2. Let us know what you think in the comments. Subscribe to the channel for more news, reviews and everything tech. My name is Manik and I'll see you in the next one.